lecture, we have seen the validation, forms validation. Yesterday some error was coming. Now again we will see that same program. Now here you can see the same program. What I have done is, first I have created yesterday's program. Again I am explaining form name. Okay, inside that method is post on submit. I have called return validate form. That function name I have called. Username, input type, text box I have taken for username, password, confirm password and age. Okay, and submit button. Now here you can see validate the form function. Here where name is the variable. Inside that I have taken document name, text box name. This is the text box name dot value. So whatever value you write, whatever value you will write inside the name text box, that value will be stored in this variable name, password. Now the document dot, this is form name again same, then password text box name dot value. Okay, password text box value will be stored inside this variable password, confirm password similarly, and number one also. Okay, now here I will check that if my name field not, my name field, if my name field is empty, means blank. Okay, I have not entered anything in my name text box. It is, but it is the compulsory field. If it is blank or it is if it is null, then it will give you the alert message, please enter your name, and return false. If it will check for the password, else if password, if it is blank or null, then it will give password should not be blank. Else if now if my password I have entered, now it will check the length of the password. If your password length is less than 6, then it will give you message that please enter more than 6 characters. And if password is not equal to confirm password, password text, password value should be equal to confirm password value. If it is not equal, then it will give you the alert message, your password and confirm your password and confirm password does not match. Else if is not a numeric number one, or number one is if number one is for age I have taken, you can take same for the contact number also. If the is nan means is not a number, not a numeric, means if the inside the age text box, if you are entering the character instead of integers, okay, or if your text box is blank or you are passing null value, then it will write please enter only numbers. If none of the if none of the condition is true, if none of the condition is true here, means if you have entered the proper details in the form, you have entered all the correct details, then it will go in the else part and it will return true, means your form is submitted successfully. Now I will execute this code. Now here you can see output. Now here I'm not entering anything, I'm leaving it blank. Then I will get a error message, please enter your name. Okay, now I'm entering the name. Now again I'm submitting, please enter your password. Okay, I have entered password 123, and here also I'm entering 123. Now here you will get that please enter your password length more than 6 characters. Okay, then what I will do, 1 2 3 4 5 6 4 5 6.
Then age I will leave it blank. Then again please enter only numbers. Okay, here it is coming number. If I am entering character, then also it will show me the error message. Please enter only numbers. Okay, 21. Okay, age I am entering. Now here my now there are no errors in my page. All my fields are correct, so my form is submitted successfully. So all of you understood validation, form validation using JavaScript. Yes, ma'am. Okay. So we will today move towards the new topic. Now we will today see jQuery. Okay. Now in this we will learn what is jQuery, why to use jQuery, adding the jQuery to your web pages means how to add the jQuery to your web page. What is the syntax of jQuery, jQuery selectors, handling the jQuery events. Now first we will see basically what is jQuery. Now jQuery is a fast, small and a feature-rich JavaScript library. Okay, jQuery is nothing but it is the library of a JavaScript. It makes things like HTML document, traversal and manipulation, event handling, animation and Ajax much simpler with an easy to use API that work across a multitude of browsers. Now this what does it mean? Traversal means HTML document traversal and manipulation means if you have already created some form like, okay, if you already designed a particular web page, now in that web page we have ordered list, unordered list. Okay, ordered list we have already seen, unordered list we have already seen in our header and footer part UL tag. Okay, UL when you was designing a header, when we design a header we use UL tag. Okay, so that is unordered list. Now suppose if you want to traverse out, it means if there is a particular tag, div tag, inside that div tag there is one more div tag, and inside that div tag there is one more table tag. So internally if you want to traverse, you want to access the table inside that particular div, that is also easy by using jQuery. That is also has become easy by using jQuery. Manipulation means if you want to manipulate means after during means when you according to a particular condition you want to change, according to a particular condition if you want to change a particular element, okay, then that is also easy by using jQuery. Event handling means when you click on a button some event occurs. Okay, so that event jQuery can handle on change event, okay, on click event, calendar ka change event, text change event. All there are multiple events in jQuery. Animation means everyone know animation. There is no need to explain animation. Ajax. Ajax means asynchronous JavaScript. It is means little bit same like means you can say animation only. Ajax much simpler with an easy to use API means there are also inbuilt APIs in a jQuery means inbuilt some piece of code inbuilt is there which provides certain output. Some like हमने use नहीं किया है. No, till now we have not designed any HTML page. So for example we can take in any of the web application you can see there is a in a home page, home about us and contact us pages are there in the web application. In a home page you can see there is a slideshow. Okay, it where it shows the company information. So that slideshow also there are some API which is already developed in jQuery. Okay, that API directly we can use to implement that particular slideshow. Now jQuery can be used means it jQuery can work on a multiple browsers means it can work any browser like Google, it can work Mozilla, Explorer, it can work on any browser. Second point, jQuery is just a JavaScript library. jQuery greatly simplifies the JavaScript programming. Means jQuery is more simpler than JavaScript. It makes the JavaScript more simpler.
jQuery is easy to learn. jQuery is the lightweight. Write less, do more. Means if you want to, means by writing the less number of lines of code, you can do much more things. The purpose of jQuery is to make it much easier to use JavaScript on your website. jQuery takes a lot of common tasks that require many lines of JavaScript to accomplish and wraps them into methods that you can call with a single line of code. Means if you want to do a particular thing in a JavaScript, means if you want to implement a particular logic using the JavaScript, if you use the JavaScript for implementation, then you have to write more number of lines of code. Okay, but in jQuery that particular task become easier. In jQuery you have to write the less number of lines of code. Only in a single line that work can be done. Now why to use the jQuery we will see. Now there are the lots of other JavaScript libraries out there, but jQuery is probably the most. Now there are many much jQuery is also a JavaScript library as we have seen, but like jQuery only there are many more other libraries also, but jQuery is mostly used and uh, popular scripting language, and it is mostly used and extendable. Many of the biggest companies like Google, Microsoft, IBM, Netflix, these all companies use jQuery for the web applications. Now, how to add the jQuery to your web pages means how to use the jQuery. Like others, C Sharp, we have seen C language. For C Sharp and C, for learning C Sharp and C, what we have done, we have installed the Visual Studio software for C Sharp. Okay, for learning C, we have installed the Dev C++ software. But for jQuery, there is the no need to install any of the software. What you have to do is just you have to download a jQuery library. You have to download from jQuery.com. You can download it and include it in your web application. Whatever web page you are creating, in that web page, whatever web page you are creating, in that web page you have to include that jQuery library. How to include? You have to include inside the head section. Inside the head section, you have to write script tag src. Okay, as inside the src you have to give the path. Now they have given your online cdn link. jQuery is available online also. You have to give the if you want you can give online link directly also, or if you want you can download that library and you can give the path of that file here. Okay, downloading that file and giving the path, this is more flexible because means whenever you don't have an internet connection, then also you can run your jQuery code. But if you include uh, online path, online CDN path, use, then compulsory your internet connection should present, then only your code will get execute. Otherwise, jQuery will not get execute. Now syntax here. So before that, first I will show you how to download it from the jQuery.com. मैम बोलो. जावास्क्रिप्ट और jQuery अलग अलग है क्या, मतलब मतलब लैंग्वेज? हाँ, कोडिंग अलग अलग है. jQuery एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट का, बट अच्छा, ओके. हाँ, कोडिंग लिखने का स्टाइल अलग अलग है. ओके मैम. यहाँ से jQuery.com आप ना यहाँ से गोइंग download the jQuery version 3.6.0. From here also you can just, if you click on the download button, यहाँ से भी आप डायरेक्टली डाउनलोड द कंप्रेस्ड प्रोडक्शन jQuery 3.6, डाउनलोड द अनकंप्रेस्ड प्रोडक्शन. ओके, ये भी यहाँ से भी आप ऐसे डाउनलोड से कर सकते डायरेक्ट. मतलब ये पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये मिलेगा. तो आपको क्या करना है, ये पूरा दिख रहा है ना स्क्रीन, पूरा ये ऐसे कॉपी करना है. कंट्रोल ए करके क्या करोगे, कंट्रोल ए डायरेक्टली कंट्रोल सी करके आपको नोटपैड प्लस प्लस में पेस्ट करके फाइल का नाम दे सकते हैं. आपको क्या नाम देना है फाइल का,
ये वाला इधर का कॉपी करना है, इधर तक ऐसे कॉपी करके वहां पे फाइल का नाम ये वाला चीज पेस्ट करना है डायरेक्टली, बस दैट्स इट. अदरवाइज वन वे one more way you can do is download. You can type here download jQuery .mean.js. You can write this also. वही चीज ओपन होता है, इधर से भी कर सकते डाउनलोड. ठीक है, सेम चीज है, सेम पेज ओपन होता है. वैसे ही कॉपी करके वैसे ही आपको सेव करना है. पर्टिकुलर वर्जन ही आपको चाहिए तो डायरेक्टली आप यहाँ पे जा सकते हो, कौन से भी लिंक पे जाओगे सेम ही चीज ओपन होके आएगा. अगर ये वर्जन आपको चाहिए तो jQuery डाउनलोड करके इसमें सब वर्जन है, आपको जो भी वर्जन का चाहिए आप यूज कर सकते हैं. मोस्टली जो रिसेंट वर्जन चले वही यूज करना. लेटेस्ट वर्जन जो है मिनिफाइड फाइल है, ये वाला आप यूज कर सकते हैं. डायरेक्टली यू हैव टू डू Ctrl+A Ctrl+C, go in Notepad plus plus, in Notepad plus plus and paste in the Notepad plus plus. You can paste inside Notepad plus plus. 1 second. ऐसा पेस्ट करना है. ओके, एक लाइन में आ जाएगा आफ्टर पेस्टिंग इन नोटपैड मैम प्लस नोटपैड प्लस. वाली स्क्रीन नहीं आ रही मैम. Okay, see, it will come in one line if you Control V. Okay, from Google you have to Control C. Okay, there for copying the jQuery file you have to do Control C in your browser. Then inside the notepad you have to do Control V, means you have paste. Then you can save this Control S. आपकी प्रोजेक्ट फोल्डर में जाके सेव करना है. मेरे प्रोजेक्ट फोल्डर में ऑलरेडी है, मैं दिखाती हूँ. jQuery folder is there. So see here you can see. Are you able to see my screen? So Yes, ma'am. here you can see jQuery dash 3.6.0. I have saved with this name. Okay. So here you can save this. Control नहीं. Okay. तो उसका नाम कैसे देना है? Again you have to go to your browser. Okay. So here you can copy this name here. ऐसे copy करना है. Ctrl+C. Then you can go here inside Notepad plus. In here you can आपको ऐसे सेव करना है. Ctrl+V. Okay, jQuery dash 3.1.mean.js. Then you have to click save. Then this file will get saved here. Okay, समझा कैसे डाउनलोड करके कैसे सेव करना Yes, है ma'am. आपको? हाँ मैम समझा. ठीक है. धनश्री, did you understood? Yes, ma'am. एक मिनट. एक सेकेंड ना, लैपटॉप हैंग हो गया है मेरा शायद. Okay, now are you able to see my screen? PPT? Yes, Yes, ma'am. Huh. Now here we will learn the basic syntax of jQuery. Now you have understood how to download and how to save your jQuery file in your project folder. Now we will learn how to use the jQuery basic syntax. We will start. Now here everything in jQuery begins with $sign. Okay. मैम आवाज ब्रेक हो जाती. Everything in the jQuery will begin with the $sign. $selector. Selector means your HTML tag means selector. Your HTML tag means selector, and dot action means whatever action you want, you can put it.
dot action means there are various actions in jQuery. Whatever actions you want, you can put it. Means a dollar sign to define or access the jQuery. Means by dollar sign, as I said, everything in jQuery, each and every code you write in jQuery should begin with dollar. Dollar sign we write to define or access the jQuery. And selector to query, selector to query or find the HTML element. Selector means HTML elements. If it, what in means HTML elements like paragraph, div, table, these are all tags we can use in selector. A jQuery action to be performed on element. Suppose now here I am taking P, $P. Now what action I want to perform on my paragraph tag that I have to write. Now the main thing in jQuery is, which is very much common, means when you start your jQuery any of the method, then you have to write in jQuery. When you start any of the method, you have to write $document.ready function. Okay, $document.ready function. Inside this you will write all your code here. Now the dollar sign represents the start of the jQuery code block, and jQuery code is the code to be implemented for the rendering of HTML element in the browser windows. Means by dollar sign we start our jQuery code, and the now why we write jQuery, if you want to means if you want to perform some actions on your HTML elements like paragraph, div, okay, any of the actions, means there is a, if there is a particular div, if you want to hide that div from the user, okay, then you can do this by using the jQuery. If you want to show the particular div to the user on a particular condition only, then you can use the jQuery to do this. The document.ready function is useful for preventing the failure of actions that should be performed on an HTML element. Now, if you want to perform any of the actions, if you want to perform any of the actions, that actions can be performed by using the document.ready function. We means it is compulsory to write document.ready function in jQuery. It is useful to prevent the failure of actions. Means if it is used to prevent the failure of any actions on any of the HTML element which you create, like paragraph, div, etc. For example, if the jQuery code for hiding an image executes before the document is ready, it will lead to failure. Document.ready means whenever you execute your application and when your page executes, okay, means when you after execution, whenever your document is ready, get ready, then only other actions on the element will be performed. If the document.ready is not there, okay, if you don't write, then before completely your loading of document is done, your image will get hidden, then it will become very much, means it will be considered as a failure only. Means before your web page gets loaded and before your loading of your web page only, your image is hidden. Means if you are only you have written the code yourself to hide a particular image, okay, from the user, and document ready function is not there, then when your web page loads, before loading only, if your image is hidden, then how do you understand what will happen? It is like an error only. It will lead to a failure. Therefore, to allow the execution of jQuery code only when the document is ready to be displayed in the browser window, all the jQuery methods and code should be declared and defined inside the document ready function. Means all the methods of jQuery we will create inside document.ready only. Any doubts still here? No, ma'am. No, ma'am. Okay. No, ma'am. Now here we will see using the jQuery selectors. jQuery uses the selectors to select and manipulate an HTML element or the group of elements. You can select an HTML element by element name, attribute name, and CSS selector. Now you want to change a particular element. Now suppose if you want to change a particular text in a paragraph, or if
you want to change the color of the div. Okay, so how to access that particular paragraph or a particular div? This can be done in jQuery by using directly you can use the p. Now suppose if you use directly p tag, now all the paragraph tags in your web page will be changed. Okay, means if you want to change the paragraph to red color, then if you use directly p element in the jQuery, then all the paragraphs in your web page will become in red color. Now if you want, but now the problem is that if you want only one paragraph to be in red color, highlighted red color, and another paragraph you want normal in black color only, so what you will do, how you will do? You can use, then for that purpose we have learned CSS. Okay, we have in CSS we have learned the concept of ID and class selectors. Okay, so you can use either ID or either class selectors. Now first we will learn one by one using element name. What is element name? You will see jQuery can be used to select an HTML element or group of HTML elements by using its name. Using the jQuery, HTML elements can be selected by referring to their name, ID or class to which they belong. Now only just I explain that using element name means directly you have to give your tag name. $H1 means I want to perform some action on my heading, H1 heading. So I will use H1 tag, element tag. If you want to use a particular ID, then you can use $hash means if you want to use the ID of a particular tag. Okay, you don't know, we have learned ID and class in CSS. If you are using ID in a particular tag, and that ID you have to you wanted to access, then to access that ID you have to use hash. You will be using hash for ID, and for a class you will be using dot. So did you understood till here? मैम वो Yes, ma'am. वहाँ बोलो. वो हैश और डॉट का नहीं समझ में आया. तुमने CSS के लेक्चर में नहीं बैठी थी? बेटी थी मैम, भूल गई. CSS तो भूल गई नहीं, आपको रिवाइज करके आना पड़ेगा. एक चीज कितने बार सिखाने का. हैश मतलब जब भी तुम आईडी यूज करते हो, पैराग्राफ बनाया तुमने, ओके, पैराग्राफ और ड्यू ऐसे कुछ बनाया है, तो पैराग्राफ हाँ. पी टैग बनाया, पी के बाजू में लिखा है आईडी इज इक्वल्स टू P1. ओके, हाँ. ड्यू का भी बनाया है, ड्यू का लिखा है ड्यू टैग, ड्यू के टैग के बाजू में आईडी इज इक्वल्स टू ड्यू1 उसी टैग के अंदर. ओके, अभी तुमको पर्टिकुलर पैराग्राफ को कलर मीन्स जो भी टेक्स्ट है पैराग्राफ के अंदर को उसको रेड कलर देना है, तो तुम स्टाइल में जाके क्या करोगे? स्टाइल में जाके कैसे करते थे CSS में? हैश लिखते थे, हैश P1 फिर ब्रैकेट में कलर कोलन रेड ऐसे लिखते थे. ओके, अगर क्लास रहता तो डॉट लिखते थे, डॉट P1, अगर मैंने आईडी की जगह क्लास बनाया होता तो. समझा? हाँ, समझ. हाँ, तो आईडी अगर बना रहे हो तो हैश यूज करना है, क्लास बना रहे हो तो डॉट यूज करना है. ओके मैम. ठीक है, कैन वी नाउ मूव फर्दर Yeah, miss. using attribute name. Now the HTML element can also be selected by using the name of an attribute. Okay, attributes means you know na, suppose you are creating a image. Image everyone know how to create. By using the image tag we will be creating an image, img tag. Img space src means you will give the path of the image in src. Okay, now this src is what? This src is a attribute. Now the HTML elements can also be selected by using the name of an attribute. The following syntax is used to select the elements by using an attribute name. Now dollar double quotes, you can write directly, write the attribute name also. Suppose you want src is equals to movie.jpg. Okay, after now suppose there is a image in your HTML page. In the HTML page, image means you have put now currently flower image. Okay, rose image you have put rose. Now after clicking on a particular button, you want to change, suppose you want the image, or on the page load, you want the image to change to Mogra flower. Then you can do this by using the jQuery also.
Now currently we have studied the id selector and class selector and attribute selector. एक सेकंड एग्जांपल बघू आहे का. Okay. Now first we will try one example of this, then we will move further. See, now where to store that jQuery file? Here you can see all my programs are there. So there only you have to store your jQuery file. Okay, in your project folder. Now project folder is my, here my project folder is programs. So inside the programs I have stored my jQuery file. Understood? Yes, ma'am. Example file.html. Now here you will first give the path of your jQuery file script. src is equals to name. What I will do, मैं उधर जाऊंगी jQuery programs. This file is there. I will right click here, rename it, copy. I've copied this file name. Then I'll go here and I will paste my file name here. Script src is equals to .js आएगा. मैम उधर main.js नहीं आएगा क्या? main.js क्या? वो main.js आपने, हाँ वो main.js आपने, मेरे फाइल का नाम ये है 3.6.0. main.js किधर है इधर? नहीं आपने जो अभी डाउनलोड करके दिखाया था ना हाँ उधर वो नाम था. फाइल का नाम वो था. अब ये फाइल मैंने अच्छा ऑलरेडी ओके डाउनलोड करके रखा है ये वर्जन का. तो ये फाइल ओके ये मैम. है यहाँ पे. ओके मैम. अभी फर्स्ट कैसे लिखूंगी मैं, यहाँ पे बॉडी में जाऊंगी. डॉलर डॉक्यूमेंट. आपके आप डाउनलोड करने जाओगे, आपके फाइल का नाम जो होगा वो अलग भी हो सकता है मेरे फाइल से. मैंने ये ऑलरेडी पहले से डाउनलोड कर रखी थी तो इसलिए मेरे फाइल का नाम ये है. मैंने ये वर्जन की डाउनलोड की है. डॉक्यूमेंट डॉट रेडी. स्क्रिप्ट लिखना है मुझे. दूसरा स्क्रिप्ट के अंदर मैं लिखूंगी. ये भी चीज किसके अंदर लिखना है? स्क्रिप्ट के अंदर ही. ये स्क्रिप्ट अलग है. इधर मैंने सिर्फ पाथ दिया है. हियर आई हैव गिवन ओनली द पाथ. नाउ कोड आई विल बी राइटिंग इन अनदर स्क्रिप्ट दैट डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी. जो भी स्क्रिप्ट रहेगा मतलब हेड के बाद ही रहेगा jQuery वाला. हाँ, जो भी स्क्रिप्ट लिखोगे ये वाले फाइल का पाथ देने के बाद ही तुम स्टार्ट करोगे. डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन. ओके, ये हमारा फंक्शन है. हमारा डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन मतलब जब भी हमारा डॉक्यूमेंट लोड होगा तब. अभी क्या लोड होने के बाद मुझे मैसेज दिखाना है हेलो हाय. ये मैसेज मुझे प्रिंट कराना है. पहले देखते हैं एग्जीक्यूट होता है क्या. एग्जाम्पल 5.html. हम लोग ये जाऊंगी इधर ओपन विथ गूगल क्रोम. आप देख सकते हो मेरा आउटपुट आ गया. विंडो आ गया है अलर्ट हाय बना. ठीक है, समझा आपको क्या किया मैंने? हाँ मैम. ओके, अगर मैं फाइल का पाथ गलत देती हूँ,
ओके, jQuery का पाथ गलत देती हूँ या फिर कुछ मिस्टेक होता है मेरा, या फिर मैं भूल ही जाती हूँ, मैं देती हूँ नहीं हूँ, ये वाला मैं हटाती हूँ। अगर मैं भूल जाती हूँ देने के लिए तो आपका कोडिंग एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप देख सकते हो इधर जाके, मैं सपोज ये रिफ्रेश करूंगी तो कुछ भी नहीं आ रहा है। ओके, तो jQuery कोडिंग के लिए आपको कंपलसरी देना पड़ेगा पाथ, और jQuery के एरर अगर आपके पेज में एरर है कुछ तो आपको देखना है कि यहाँ एरर से, तो आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आप यहाँ पे कंसोल में एरर्स देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा रहेगा, मैंने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, and after right clicking and inspecting the element you can see all your errors inside the console tab. See what errors they have, what type of error they have given, that uncaught reference error, dollar is not defined. Dollar is not defined means they have not get a, they didn't get the jQuery file. Okay, they have not got a jQuery file. Now again I am pasting my path of the file. Now again if I refresh, my output will come, see like this, and there will be the no errors in your console. So did you understood how to do it? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. Okay, now suppose I am writing here paragraph tag. Now if I take directly, now there are two paragraphs. If I take $P, okay, $P dot CSS color, comma, red. देखते हैं if it works. मैम वो पी के ऊपर इन्वर्टेड कॉमा लगेगा क्या मैम वो? नहीं, एक मिनट, ऐसे लिखेंगे हम लोग p डॉट css color colon red, ये राइट है, सिर्फ डबल कोट्स लिख के देखते हैं अभी क्या सिंटैक्स में प्रॉब्लम है। encaught error, syntax missing, $p syntax dot document dot ready function, round bracket, ready function missing, red। वापस से लिख के देखती हूँ मैं यहाँ पे नीचे, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन
dollar p, actually writing equal to dot css, सेम ही है कलर, कॉमा रेड, इस तरीके देखते हैं अभी, बताते सेम ही है। मैंने अभी क्या किया है, कोलन की जगह रेड कॉमा डाल के देखा है, ब्रैकेट तो मैंने चेक किए प्रॉपरली क्लोज हुए, नेक्स्ट टाइम भी लिख के। अभी आ गया आपका कलर रेड कलर में, ओके। तो प्रॉब्लम कहाँ पे था, सिंटैक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, कोलन की जगह आपको कॉमा लिखना है, ओके। नो पर्टिकुलर मुझे क्या करना था अभी, ये जो पैराग्राफ से ये मुझे रेड कलर में करना था बाय यूजिंग द jQuery. So what you have to write, you have to first write document.ready function, then you have to make p.css color to red. Okay, document.ready when your page loads. Now if I comment this document.ready and only if I write p.css red color, then I will not get output. Okay, here you can see there is no output also and no error also. So compulsory you have to write document.ready. Okay, now suppose for the particular paragraph only I want to, now here I am giving id as p1, id is equals to, suppose I am giving here p2. Okay, now for this particular p1 I want to make red color and this p2 I want in blue color. Now here I will, what I will do, I will write here hash p1 css to red. Now same again I will copy this line, inside this only I will write p2 css color to blue, plut blue. Now I will refresh my page. See, can you see, this is in red color and this is in blue color. Yes, ma'am. So did you understood? Yes, Yeah, ma'am. ma'am. Okay, Yes, ma'am. तो ये इसका प्रॉब्लम बहुत होता है सिंटेक्स का, मोस्टली ब्रैकेट का, इसलिए मैंने डबल डबल टाइम आपने देखा रहेगा लिखा था, ये ब्रैकेट्स ओपनिंग क्लोजिंग ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, अदरवाइज तुम्हारा एग्जीक्यूट नहीं होगा कोड। मॅम हाँ बोलो, सपोज आपल्याला याला बोल्ड करायचे काय वर्डला, करायचंय, बोल्ड करायचे, बोल्ड नाही तर इटॅलिक. बोल्ड किंवा इटॅलिक ना, हा हा, तर कसं द्यायचं ऍट्रिब्यूट? ओके. सपोज ह्या पॅराग्राफचा बोल्ड करू आपण, इथे हेल्प पण येते अशी, फॉन्ट वेट कॉमा द्यायचा बोल्ड. आला बोल्ड मध्ये, आणि जर तुम्हाला रेड कलर मध्ये पण पाहिजे असेल तर कसं करायला लागेल, अगर आपको यही चीज बोल्ड में भी चाहिए और रेड में भी चाहिए, देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक हियर लाइक दिस, color in red. So anything, yes, if you want to change the font size also you can change here like this. If you want you can take font dash size
into, suppose I want it into 25 pixels, then you can give like this also. So any property of CSS you can implement in this way only. See. Okay, now your font size has increased. So did you understood any doubts regarding this? No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. So similarly, as we have done by using the ID, same thing. By using the class also you can do same thing. But instead of hash, just you have to use dot for CS class. Now you will see using the CSS selectors. jQuery provides the CSS selectors to modify the CSS property of an HTML element or document. jQuery provides the CSS selector to modify the CSS properties of an HTML element or document. The following syntax is used to apply the CSS selectors to modify the document or element properties. Now this I have already we have seen now only here. Selector, selector.css property name and comma property value. Okay. Consider the following code snippet to change the color of text of the div element to green. Now we have learned how to change the color of the paragraph. Okay, so similarly we can change color of div also. $div you have to give .css color comma green. In the preceding code snippet, all the div elements are selected in the document and the CSS color property value is modified to green. Now with the CSS selector, you can set the multiple properties on an HTML element also. The following syntax is used to set the multiple CSS. Now हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CSS property name colon value comma property name colon value एक लाइन में अगर लिखना रहेगा तो means here you can see if you want to apply like color font size okay font weight properties on a particular div you can use like this also you can write like this also property name colon value just what you have to give as a curly bracket opening curly bracket and closing curly bracket you have to give. In the preceding code snippet, all the div elements are selected in the document and the CSS color property value is modified to green and font size to 200% here. So understood everyone this jQuery so CSS selectors? सबको समझ हाँ। आ? मैम बोलो. मैम हम्म. अभी तो हमने कलर कोलन लेके ग्रीन रेड लिखा था तो वो आया नहीं था फिर इधर कुछ लिखा है आपने वो वाला. हाँ यार मुझे भी वो नहीं समझा मैंने भी ऐसे ही लिखा था ना कलर कोलन ग्रीन तभी मेरा आया वर्क नहीं हुआ था बट उन्होंने ऐसा लिखा है तो उनका वर्क हुआ है तो मुझे भी एरर नहीं समझ में आया तो फिर कौन सा यूज करना है कॉमा यूज करना है कोलन यूज करना है. कॉमा ही यूज करो फिर देखते हैं अब वापस ट्राई करके देखते हैं अभी वेट ओके मैम. एक्चुअली मैंने पहले कोलन ही डाला था लेकिन मेरा आया नहीं था रेड में करते हैं कोलन कोलन एक्चुअली आना चाहिए था बट उसने आउटपुट में नहीं दिया. मैम डी लेके देखिए ना डी का इतना पूरा का पूरा तो सेंटेंस गया डाल के वापस देखिए. अच्छा प्रॉब्लम है वो पीपीटी वही में ही वही गलत ब्रैकेट दिया में रहेगा. हाँ बोलो. वही ब्रैकेट में अलग प्रॉपर्टी यूज करो ना. अच्छा अभी ये मैं कमेंट करती हूँ इधर का पहला P2 का रहने दो फिर हम लोग क्या करेंगे इसका यूज कैसे करेंगे इधर ऐसे करके देखते हैं आता है क्या. आ गया अगर मल्टीपल हाँ. प्रॉपर्टीज डालते हैं तो कोलन होके आता है सिंगल ओके प्रॉपर्टी मैम. यूज कर रहे तो कोलन पे नहीं आ रहा है वो. अभी यहाँ पे ब्लू के लिए चाहिए तो हम लोग कोलन डालते हैं वापस देखते हैं ब्लू कलर आता है क्या. गया नहीं
सिंगल के लिए नहीं आता है. अगर मल्टीपल प्रॉपर्टी इफ यू आर यूजिंग देन फॉर कोलन इट कम्स. इफ यू आर राइटिंग ओनली सिंगल देन यू हैव टू यूज कॉमा. तो आउटपुट नीचे तो मेरे जो वर्जन डाउनलोड किया उसमें तो ऐसे आ रहा है. ओके ओके मैम. ठीक है. समझा आप लोगों को? जी मैम. Now you will learn handling jQuery events. In jQuery, events are handled by using the functions or the predefined event methods. An event method is used to detect an event and trigger a function. When that event occurs, you can manipulate an element with the function or an event method. Now there are some inbuilt events in a jQuery. Okay, that event we have to use if you want to do a particular task, or means if you want to manipulate, means if you want to change a particular element, means change a particular tag, means on clicking of the button what should happen, on double clicking on a button what should happen if you move a cursor inside the div, if you move a cursor outside the div. So these are all the events. The event which we will be learning here is document.load function. Now it is used to execute a function after the document has finished the loading. Means when your document has loaded, then this event will fire. It will execute the code which you have written on this event. Now selector.click function used to execute a function on the click event of the selected element. Now if you click on a particular button, now after clicking on a button what should happen? Okay, so this is this will happen by using the click event. Now selector.dbl click function. Now it is used to execute a function on the double click event of the selected element. Now if you write double click and if you write the logic, okay, means what will happen on the double clicking of a div or a button, what logic should perform, what action should be done, that will be get executed. $selector.mouse enter function used to execute a function when the mouse pointer is moved over to the selected element. Now, if you move the mouse inside the paragraph or inside the div, what should happen? Now selector.mouse leave function. It is used to execute a function when the mouse pointer is moved out of the selected element. Now what should get execute if you leave the mouse from the div? Okay, if you move the mouse out of the div. Now selector.keydown function. Now what action should perform if you press a particular key? Okay, on the selected element, means on a paragraph if you press a key, what should happen, or on a div. Now selector.submit method. Now it is used to execute a function when a form is submitted. Means when you submit a form, what should happen after submission? It is used to execute a function which form is submitted. Selector.focus. Now it is used to execute a function when the selected element gets a focus. Okay, when a suppose text box element is there, when you set a focus on text box, what should execute? Now selector.blur function. It is used to execute the function when the selected element loses the focus. Means now you have put a focus on a text box, means cursor is on the text box name. Now what will happen if the text cursor means cursor is not there on a particular text box, when it becomes blur, what will happen? Resize. Now if you want to use to execute a function when the browser window changes the size, when your window change the size, then what will happen? That thing is written in this event method. Unload used to execute a function when the user navigates away from the page. What will happen if the user moves away from the particular page? Mouse down is used to execute a function when the left mouse button is pressed down on the selected element. Means if you move your cursor inside the paragraph or div or any of the tags, if you click on a left button of your mouse, what will happen?
Okay, which function will execute, what function means what logic will get execute. Okay, selector mouse up, it is used to execute a function when the left mouse button is released. When you leave your, after clicking you leave your left mouse button, so what logic will get performed. त्याच्यामध्ये हे नाही दिलंय फंक्शन्स कसे इम्प्लिमेंट केले. ठीक आहे, याच्यातले काही मेथड्स आपण करून बघूया आता. मैम हिंदी में बोलो ना. हाँ हाँ सॉरी. ना ये वाला मेथड्स हम लोग यूज करके देखेंगे थोड़ा बहुत जो जो है इम्पोर्टेंट. फर्स्ट वी विल use a click function. Load function to or the document.ready is like a load function only when your document is loaded. Now we will see click function. Let us use a click function here. Example 6.html. Okay, now we will first create a structure like this HTML. Now first we will run this and see designing proper है क्या. Okay, designing is proper. Now I will start writing here my jQuery code. What I want to do is after clicking on the button, my paragraph color should change to red after click on a button. Dollar hash btn1 dot click dollar hash p1 dot css color comma red and semicolon. Okay, now I am saving this. Now you have seen I have not written document.ready function. Let's see what happens if my code works or not. I think my code will not work. See, my code is not working here.
1 minute, let me check the error message. Error message भी नहीं दिखा रहा है. I will write here document dot ready function here. Dollar document ओके. अभी मैं एग्जीक्यूट करती हूँ मेरे कोड को. ठीक है, आया रेड कलर में. हेलो, आई एम अ paragraph 1. Now after clicking on the button it has came. So did you understood? Yes, ma'am. मॅम एक डाऊट होता. हाँ बोल. ते पेजला टायमर लावतो आपण, तर टायमर हे झालं ऑटोमॅटिक पेज सबमिट होतं. तसा एक एक्झाम्पल दाखवाल का हे करून? ते एकदम टायमरचा ते ह्याच्यामध्ये टायमर लावून काय करायचे, पेज सबमिट. ऑनलाईन एक्झाम असतात ना, 30 मिनिट्स नंतर ऑटोमॅटिक सबमिट होतात, नाहीतर सबमिटचं बटन डिॲक्टिव्हेट होतं नंतर. ते एकदम थोडंसं ऍडव्हान्स पार्ट आहे त्याचं. कोड वगैरे ते तुम्हाला फॉर्मचं डिझाईन वगैरे त्याच्यासाठी आता करावं लागेल मला. हा जेव्हा का? तुम्ही प्रोजेक्ट वगैरे बनवाल, वेबसाईट आता बनवायचीच आहे ना, मग हा. तेव्हा तू इम्प्लिमेंट कर, तेव्हा मी सांगेन तुला कसं 30 मिनिट साठी ठेवायचं आणि काय. ओके. हा, हे jQuery मीन्स पर्टिक्युलर टॅग वरती तुला चेंजेस करायचा असेल तर ते सगळ्या गोष्टी आपण jQuery यूज करू शकतो. आता टायमरचं जे आहे ना, त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या मल्टिपल गोष्टी इम्प्लिमेंट होतील. तुझं कॅलेंडर येईल, ते तुझं टायमिंग साठी तुझं हे पण येईल, काउंट वगैरे हे सगळं करावं लागेल. ओन्ली jQuery नी पॉसिबल नाही होणार ते. ठीक आहे. ओके मॅम. हा. नेक्स्ट फंक्शन कौन सा था, DBL क्लिक फंक्शन, डबल क्लिक फंक्शन. इसमें ही मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ कमेंट डाल डाल के. DBL स्पेलिंग DBL क्लिक फंक्शन, DBL CLI. नाउ मैं अभी देखती हूँ यहाँ पर ही डॉलर सेम बटन #BTN1. सब कुछ ऐसे ही लिखना है, जितने भी फंक्शन है सबके लिए ऐसे ही लिखना है, कोडिंग से ही नहीं है. फंक्शन then you will change बटन का डबल क्लिक करने पर पैराग्राफ का कलर होगा ब्लू कलर. देखो, 2 बार क्लिक किया तो ब्लू ब्लू आया. एक बार क्लिक किया था तो रेड आया था पहले, फिर दूसरी बार और एक बार किया तो ब्लू आ गया मेरा कलर. मैम अभी एक बार देखो. किया तो रेड आएगा क्या? हाँ, एक बार किया ना तो रेड आया, फिर और एक बार किया, 2 बार किया तो ब्लू आया. ठीक है. हाँ मैम. नाउ वी विल सी माउस एंटर फंक्शन. मैं थोड़ा सा करके दिखाती हूँ, फिर बाद में बाकी का आप कर लेना. सेम ही टाइप ऑफ कोडिंग है.
देखिए ये मैंने div बनाया. Hello, how are you? ये हमें दिखेंगे पैराग्राफ में. इस div को भी हमको देना पड़ेगा ID div1. इस पैराग्राफ को also we will give an ID as p3. Okay, now here we will use the mouse enter function. Dollar, I will put my hash div1. Dot mouse enter function now. अभी मुझे माउस जब भी मेरा div के अंदर जाएगा तभी मुझे क्या चेंज करना है. डॉलर हैश p1 dot css color comma red. p3 है ना मेरा आईडी, पैराग्राफ का आईडी p3 है. अभी ये मुझे करना है. अगेन अभी मैं वापस रिफ्रेश कर दी हूँ फिर आपको पता. अभी देखो div के अंदर का टेक्स्ट ब्लैक कलर है. जैसे मैं अंदर जाऊंगी तो मेरा ये कलर हो गया रेड कलर का. नाउ डॉलर हैश p3 डॉट टेक्स्ट. देखो अभी मैं बाहर से अंदर गई तो मेरा टेक्स्ट भी चेंज हो गया और मेरा रेड भी कलर हो गया. अगर मुझे अंदर जाने के बाद टेक्स्ट भी चेंज करना है तो डॉट टेक्स्ट यूज करना रहेगा. समझा आप लोगों को क्या कर कैसे यूज करना है सब. यस मैम. Yes, ma'am. तो बाकी क्या मैम बोलो. कोड दिखाइए ना. ओके मैम. Okay, so now similarly you can implement all the event methods. Now we will move towards the next. Adding the visual effects. Now how to add the visual effects using the jQuery. Visual effects means you want to suppose hide a particular div, show a particular div, or toggle means hide show at a same point. Slide, fade, animation. So how here we will learn this. Now with the help of jQuery, amazing visual effects can be applied to the elements of a web document. These visual effects help to enrich the browsing experience of a user. Some of the predefined jQuery effects that can be used to add the visual appeal to a web page are. Now you can add the visual effects. Okay, to means to make your web page more beautiful. You can add an animation effect, fade effect, slide effect. These effects you can give in your web page. This can be done by jQuery. Now the hide function is used to make an element disappear when an event such as click or double click occurs. The following syntax is used to hide the selected elements. Okay, now if you on a click of a button, if you want to hide a particular div, this can also be done. Okay, now if you want to hide a particular div at a some speed, means slowly you want to hide, you give one more
precise visual effect. Okay, then this can also done by adding the speed parameter to the hide. You can see here dollar selector dot hide, and inside the bracket you have written speed. So by giving the speed value, you can hide it. You can give speed value, you have to give in milliseconds. Like after 1 second you have to hide, you wanted to hide, then you can give 1000 millisecond. For 2 seconds you can give 2000. In the preceding syntax, speed is an optional parameter. It is optional. If you want to give, then only you can give. You have to give. If you don't want to give, you don't give. It doesn't affect your output or syntax. Slow, normal, fast, or the duration in milliseconds at which an element disappears. Means after 2 seconds it will disappear if you give the speed 2000. Now here they have shown you how to implement the hide effect. Here you can see, first you will see this, your HTML coding part h1. This is your heading and this is your button. Inside the heading you have written I am the header, and on the button the hide the header button you have created here. On the clicking of this button, here you have clicked on a button. Okay, button dot click function, inside that you have written h1 dot hide slowly, means now it will hide your heading tag in a slow motion. Okay, now first before moving forward we will implement this effect. अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन देखे मैंने HTML के जो अपलोड किए हैं, आपको सॉल्व करना चालू करना है. हाँ मैम. विवेक, नाही बघितले मॅम. तो फर्स्ट बॅच जी आहे .NET ची, ती कधी देणार आहे असाइनमेंट C# चे? कधी सबमिट करणार आहे? सेकंड बॅचने 3 असाइनमेंट सबमिट केले C# चे. तुम्ही कधी करणार आहे? डॉक्युमेंट फाईल करूनच पाठवायला लागेल का? हा, दुसरं कसं पाठवणार तू? ठीक आहे, डायरेक्टली कोडिंग पाठवायची असेल तर डायरेक्ट कोडिंग पाठव. ठीक आहे. $. Now you will not use hash because now you have not given the ID to a button. Now you can use directly a tag button because there is only one button in my page. Click. First I have to write $document.ready. First I will write document.ready function. Inside that I will write $.
ठीक है, बटन पे क्लिक करने के बाद मेरा हेडिंग टेक्स्ट स्लोली हाइड हो जाएगा. नाउ आई विल एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम हाइड इफेक्ट. अभी क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हो स्लोली वो हाइड हो गया. ये देखो, क्लिक करने के बाद स्लोली हाइड हो. ठीक है, यस मैम. एवरीवन अंडरस्टूड? यस मैम. मैम मेरे को डिस्प्ले नहीं हुआ, बताओ. हाँ, स्क्रीन नहीं है मैम मेरे को. क्या नहीं है तुमको? मैम वो स्क्रीन नहीं आई थी मेरे को. बताओ ना मैम एक बार वापस. अच्छा, तो ये देखो अभी दिख रही है स्क्रीन. हाँ मैम दिख रही. बटन क्लिक करोगे तो स्लोली ये H1 का जो तुमने हेडिंग हाँ लिखा था मेरे वो को हाइड दिखा. हो गया. विशाल. अभी रिफ्रेश करोगे तो आएगा. Now we will learn implementing the show effect, how to implement the show. Now similarly like hide, you can use the, instead of hide you have to write show function. Now the show function is used to make a hidden element visible. Now if any particular div is hidden, okay, or any paragraph is hidden, then if you want to display that paragraph or div, then you can use the show instead of hide. The following syntax is similar like hide, only instead of hide they have written show. In the preceding syntax, speed is an optional parameter, same definition like hide. This parameter is used to specify the speed with the values slow, normal, fast, or the duration we can give in milliseconds. Implementing now toggle effect. Now toggle function can be used to switch between the show and hide effect of an element. This event can be used to hide or show the element alternatively when an event occurs. Now, for example, you can take real life example in our homes. Now for switching a fan, there is a one button. Okay. And for if you want to off a fan also, there is the same button. Means toggling on, off, there is a one button. Similarly, to hide a particular tag, there will be the same button, and to show a particular tag, div tag, you can say, there will be the same button. So on the same element, you have to toggle. Then the syntax will be $selector.toggle, and you can give speed. Speed is optional parameter. In the preceding syntax, speed is an optional parameter is used to specify the speed with the values slow, normal, fast, or duration in millisecond at which an element disappears and reappears. Now here you can see the example. Okay. अभी हाइड के बदले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टॉगल. मैं कुछ भी नहीं लिख रही हूँ, स्लो होगा. ठीक है, बटन की क्लिक पे टॉगलिंग होगा तुम्हारा. अभी सेम एग्जांपल, हाइड हो गया, शो हो गया, हाइड हो गया, शो हो गया. सो डिड यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव डन? यस मैम. मुझे क्यूरी है, जब हम हाइड हाइड यूज करते हैं हाँ, अभी हाइड करना तो रहेगा तो हाइड यूज हाँ करेंगे, शो करना नहीं रहेगा हाइड show. और हाँ अगर नहीं. हाइड और शो एक ही बटन पे चाहिए तो टॉगल. अच्छा समझा? एजाज, सैफ, डिड यू अंडरस्टूड? या मैम. सैफ, हाँ. Now implementing the slide effect. Now you have now seen toggling effect. Now you will learn sliding effect. Now the slide effect can be used to produce a sliding effect on the selected elements. There are the three slide functions: slide down, slide up, slide toggle. Okay, slide down means your sliding will move down. Slide up means it will move up. Toggle means up, down, like a hide show button, which can be applied on the selected element. These functions apply a gradual modification on the height of the selected elements to create the slide animation effect on the web page. Now, if you want
a particular element to slide down, then you can use slide down. The speed will be the option. Produces the effect of sliding selected elements in downward direction. Slider produce the effect of sliding selected elements in the upward direction. It will move the particular element upward. Toggle means it will move up, down, up, down. Now here, एक मिनट, एक एग्जांपल लेते हैं. Now here only I will create one div. Here you can give style. Now अभी के लिए मैं ये हाइड कमेंट करके रखती हूँ. Now after clicking means जब मैं बटन पे क्लिक करूंगी तभी मेरा div क्या होगा, यहाँ पे div dot slide down. तो फिर स्लाइड अप लिखती हूँ. स्पीड में देती हूँ 1000 नहीं 2000 मिली सेकेंड देती हूँ. फिर रिफ्रेश किया, अभी क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं 2 सेकेंड में ये हमारा आ गया. अभी रिफ्रेश करती हूँ तो बटन क्लिक करने के बाद वो क्या नीचे नहीं आएगा क्योंकि मैंने अभी सिर्फ स्लाइड अप का लिखा है ना. मैम इसमें भी स्लो फास्ट का है क्या इसका? हाँ स्लो फास्ट का है ना, मैंने टाइम दिया लेकिन 2 सेकेंड का. देखते स्लो यूज करके, उन्होंने मेंशन तो नहीं किया है, रहेगा स्लो फास्ट का भी. स्लो फास्ट भी आप कर सकते हो. स्लो किया मैंने ऐड. नहीं स्लो सपोर्ट नहीं करता है, कंपलसरी आपको इसको टाइमिंग सेट करना रहेगा 2000 3000 ऐसा. मैंने 2000 सेट किया. 2000 मतलब 2 सेकेंड्स. ओके वो बताया था आपने मिली सेकेंड्स. हाँ. अभी स्लाइड अप का समझा. अभी मुझे अगर ये भी मैं यहाँ पर कमेंट करके रखती हूँ. अभी मैं क्या यूज करूंगी, टॉगल यूज करूंगी तो एक ही बटन में मेरा ऊपर नीचे होगा. ठीक है, समझा क्या हो रहा था. Yeah, ma'am. हाँ Yes, मैम. ma'am. हाँ एक ही बटन पे तुम्हारा हाइट शो हो रहा है लेकिन मुझे स्लाइड अप एंड डाउन चाहिए. वो टॉगलिंग में हाइट शो हो रहा था ना, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सपोज स्लाइड टॉगल. अब ये स्लाइडिंग होगा, अभी हाइड और शो के बदले स्लाइडिंग होगा. अब देखना गया ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे. ठीक है, समझा आपको. हाँ. Yes, ma'am. Now अभी implementing the fade effect. The jQuery fade effect is used to gradually reduce the opacity of the selected elements. You can fade an HTML element in and out of the visibility.
The following table lists the four function to produce the fade effect. फेड पता है ना सबको, हम लोग बोलते हैं ये कलर फेड है, मतलब क्या है, ये कलर डार्क है, ये फेड कलर है, मतलब उसका ओपेसिटी अलग रहता है। अभी ये जो फंक्शन है ये डिटेल में हम लोग कल देखेंगे विद एग्जांपल। ओके हाँ मैम। ठीक है, कल हम लोग का jQuery खत्म हो जाएगा। एक सेकेंड ना, ठीक है, अभी मुझे अटेंडेंस दे दो और मुझे असाइनमेंट 4, प्रेजेंट। एक मिनट, असाइनमेंट 4 बाकी का बैच जो सेकेंड बैच है वो कब देने का सोचा रहा है? ईमेल कब करने वाला है असाइनमेंट 4 को? सी शार्प का एजाज, सैफ, निहाल, धनश्री कब करने वाले हैं? 3-4 दिन में मैम। एजाज तुम कब करने वाले ईमेल? आवाज ही नहीं आई एजाज तुम्हारी। मैम 3 to 4 days में देते हैं। इतना 3-4 दिन एक असाइनमेंट के लिए क्यों चाहिए? 2 दिन में दे दो। मैम HTML भी साथ साथ में कर रहे हैं हम लोग। अच्छा फिर HTML जो किया वो तो ईमेल करो, HTMल जो किया रहेगा वो ईमेल कर देना। ओके मैम। HTML भी स्टार्ट करना है असाइनमेंट सॉल्विंग के लिए, मैंने अपलोड किया है असाइनमेंट HTML का भी। और जो बाकी के बैचेस है, दोनों बैच ने क्विज दिया है, क्विज जो देना था लास्ट वीक वो दिया सबने। मंडे ट्यूसडे को जो क्विज शेड्यूल था वो तुमने दिया। नहीं मैम वो नहीं किया अभी। मैम मेरा रह गए। मेरा भी रह गया मैम। क्यों नहीं दिया? जब भी शेड्यूल किया रहता है तभी देना रहता है। अभी ये वीक में मैं नहीं वापस शेड्यूल करती हूँ। नहीं, हाँ हमारे यहाँ हाँ ना मैम कर दीजिए ना, हम लोग भूल गए थे, ध्यान नहीं था। आज ही नेटवर्क आया है। अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम था, हाँ ठीक वो है। तो मैं अभी कब से शेड्यूल करती हूँ? हाँ, फ्राइडे सैटरडे में शेड्यूल करूंगी, ठीक है। ओके मैम। ठीक है। अटेंडेंस बाकी के सेकंड बैच के सब डिस्कनेक्ट हो जाओ, चारों के चारों प्रेजेंट है ना? ओके हाँ मैम। या मैम। यस मैम। तो आप डिस्कनेक्ट हो जाओ, फर्स्ट बैच के मुझे अटेंडेंस दे देना है। ओके मैम, थैंक यू मैम। विवेक प्रेजेंट है, अक्षय वीर आर Oh, यू ma'am. प्रेजेंट? शुभम थोरवे, यस मैम। विवेक, शुभम थोरवे, अक्षय वीर, ठीक है।